Hello everyone, welcome back to Let's Crack JEE in English, the channel of Unacademy. And I'm Jeetendra Dixit. Here is my profile. So let me give you my short introduction. I did my BTech from IIT Kanpur, and I've been mentoring IIT-JEE aspirants for last 11 years. I teach mathematics, and today I'll continue AOD. So we were doing theorems, and Rolle's theorem we have done. And we have also practiced a few good questions of Rolle's theorem. Now today we'll do LMVD and Cauchy's theorem. Okay, we'll finish these two remaining theorems today, and after that we'll start maxima, minima, and monotonicity of the function. All right. So before we begin, let me tell you about the Unacademy subscription. As you know, if you are preparing for IIT-JEE, you can have two types of subscriptions you can buy on Unacademy. One is Plus subscription, and other is Iconic subscription. So in Plus subscription, you get access to daily live classes of all the educators who are teaching for IIT-JEE. You can watch their live sessions, and as well as their their recorded sessions also. If you miss something, then every session is recorded, so you can watch recorded session offline as well by downloading it. And you can ask your doubts also during the live sessions. Uh, and there will be also doubt clearing sessions, dedicated doubt clearing sessions. And during the live sessions, you can chat with your educator, you can participate in poll. So these sessions are very interactive. Okay. Basically, if you don't have any subscription, then you can attend special classes. Special classes are also live classes taken by these educators on different various topics. And these classes are completely free. You can attend unlimited special classes going on Unacademy's platform every day. Okay, so you still have unlimited things to learn through special classes. And if you attend special classes, you will also come to know that these classes are very interactive. Okay, all these features are in special classes also, same features. Live tests and quizzes will also be accessible to you, and all the courses which I was talking about on Academy's Plus. These are well structured courses. Everything is pre-planned. You can see the all upcoming lectures in advance with topic name, date, time, and educator's name. All right. And these are the subscription charges. You can subscribe for 1, 3, 6, 12, and 24 months. Okay. 12-month subscription charges 38,500, and after 10% discount it is going to be 34,650. Similarly, for 24 months it is 56,000, and after 10% discount it is going to be 50,400. Now this is the Iconic subscription. Like in Iconic subscription, you get all the benefits of Plus. I mean, everything which you are getting in Plus subscription, you get the same benefits in Iconic also. Apart from that, you get a personal coach who will guide you throughout your preparation for top exams. Your test analysis will be done in a personalized manner. Your personalized feedback will be given to you to improve your time management and exam approach. Your study planner will be customized, and bi-weekly reviews will be given to you, highlighting your progress. All right. So these are additional features in Iconic subscription, and this these are the charges for Iconic subscription. For 12 months, it is 56,000, and for 24 months, it is 86,000. All right. And obviously you get the 10% discount. Use code JEET1, so you'll get 10% discount. Okay, so this is the referral code you can use. Hi Raghav. Abhi, first let's finish AOD, and then after that we will plan straight lines. Okay. You haven't done pair of straight lines. तुमने pair of straight lines पहले नहीं किया क्या? Don't worry, I'll tell you as soon as I get the time, because I have many other classes on weekends. Because basically I have a lot of other classes also. That's why there was some time clash. I could not take yesterday. I'll take it today. Okay, I'll try to take it today, but I'm not sure because
it's already 3 o'clock, so let's see. Okay, because what I want to do, I want 2 hours for that class so that I can finish it in one shot. I can take it for like 45 minutes, 1 hour, but I won't be able to finish it. So that's why. Okay. So I'll keep this session short, and after that immediately I'll start straight lines. Okay, because I have time up to 5:15. I can finish up to 5:15. So okay, let's finish these two theorems, and then we'll start that session. Okay. Okay. Ready? Ready for 2 consecutive sessions, Mr. Raghav? So this is Unacademy's learning app. You can download from Play Store, and let's begin the session now. Okay, ठीक है. Let's finish then. Let's finish this LMVT, Lagrange's mean value theorem. So using Lagrange's mean value theorem, it says if f is a continuous function in closed interval a to b, first two statements are same as in Rolle's theorem, and f is a differentiable function in open interval a to b. Now third condition is not required. Then there exists at least one C belonging to A to B such that f dash C is equal to f of B minus f of A is equal to B minus A. So you can see in Rolle's theorem f of B was equal to f of A. So f dash C was 0. Now f dash C is not 0. If you see it geometrically, it's like this. Theorem is saying that if function is continuous and differentiable between A and B, then there exists one C between A and B where slope is equal to slope of this line. You can see slope of this line is, right? This is the slope of line f of B minus f of A divided by B minus A, right? So there will be at least one C between these two points where this tangent, slope of tangent, which is f dash C, f dash of C will be parallel to this line. Okay, this is what he's saying, right? This is f dash C. So these two lines are parallel. Okay, this curve is going like this, so somewhere it will be parallel to this line. So this is Rolle's theorem. Sorry, LMVT, Lagrange's mean value theorem. LMVT. So we use this theorem sometimes to prove some inequalities also. See how. Suppose, for example, prove that nothing is given. Okay, nothing is given. We just need to prove it. Prove that tan inverse of B minus tan inverse of A divided by B minus A is less than 1 plus B square, where A is less than B. Okay, it's greater than 0. We need to prove this inequality. Now think about, you can see this expression is similar to the one we were having in LMVT. Okay, so now you need to choose your function, you need to apply theorem, you need to prove this inequality using that theorem. Now how do you start? Would you like to try it, or I shall explain?
Okay, try it, try it. Using OAB relation. OAB relation. What OAB relation? See, I'll tell you. Wait. First of all, you can see which function is used, right? Tan inverse of x. So let's take tan inverse of x. Tan inverse of x is continuous and differentiable in any interval, right? So always differentiable. So that means if it is always differentiable, then you can apply LMBT in any interval, right? So for x belonging to a to b, right? We can we can have some c, and c belonging to a to b open. We can write f dash c is equal to, okay, for some c belonging to a to b, we can write f dash c dash of c is equal to f of b minus f of a upon b minus a. We can write this, right? And using it, you can write f dash c क्या होगा? What is the differentiation of tan inverse? What is the derivative? Derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. So it is 1 upon 1 plus c square, right? ये derivative आ गया, is equal to f of b. F of b means tan inverse of b minus tan inverse of a, right? Divided by b minus a. You can see this, huh? Is similar to 1 upon 1 plus c square. Right. All right. Now see, we need to make inequality. So can you tell me 1 upon 1 plus c square में what kind of function is 1 upon 1 plus c square? Increasing or decreasing after 0? 0 के बाद, because हमारी जो values हैं वो 0 के बाद वाली हैं, right? So for positive side of x axis, which kind of function is 1 upon 1 plus c square? I mean इसमें a डालेंगे, suppose we are putting a, then जो value आएगी that will be greater than 1 upon 1 plus c square or less than 1 upon 1 plus c square. Compare these two. Which one is greater? The first one or the second one? First I'm saying 1 upon 1 plus c square. Second I'm saying 1 plus 1 upon a square. Which one is greater? Decreasing function. Yes, it's a decreasing function. So because a is a, and because we know that a is less than c is less than b, right? That this is the order.
सो ए पे जो वैल्यू है दैट विल बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू, और जो बी पे वैल्यू आएगी दैट विल बी द लीस्ट वैल्यू बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट? हैव यू अंडरस्टूड दिस? नाउ दिस वाज व्हाट f of b, इसकी वैल्यू पुट कर दो यूजिंग दिस फर्स्ट रिलेशन. सो प्रूव्ड इट इज tan inverse of b minus tan inverse of a divided by b minus a is less than 1 upon 1 plus a square is greater than 1 upon 1 plus b square. Is that okay? This is one of the point. The second point is you try this sum. I'm giving you to prove it. Prove that sine of b minus sine of a mod is less than mod of b minus a. Okay. You can take any order. The a and b belong to real numbers. Okay. Any real numbers, doesn't matter. Yeah, of course a is not equal to b. Let's take distinct. Prove it. देखो इसमें कौन सा फंक्शन लेंगे, विच फंक्शन वी नीड टू टेक. हाँ बिल्कुल सही है. विल टेक f of x is equal to sin x, right? Sin x is a differentiable function, right? So differentiable function है, so LMVD is applicable in any interval. So for c belonging to a to b, we can write f dash of c is equal to sine of b minus sine of a divided by b minus a, right? Like this. And mod भी लगा सकते हैं. We can put mod. What is f dash c? F dash c is basically cos of c. Mod is equal to sine of b minus sine of a divided by b minus a. All right. Then we know cos of c is always less than equal to 1, right? Always less than equal to 1. So using this, we can write sine of b cross multiply minus sine of a. Mod laga diya, so it's a positive number, so in cross multiply is less than equal to mod of b minus a, right? It's always true. Got it? So in this way, you can prove some inequalities. Now suppose if fx is a differentiable function, okay? Differentiable function in open interval a to b, and okay, not in any interval. This is for all x. Differentiable function for all x. And
Okay, wait a minute. Then prove that. Then prove that. Now see. So any, left hand side expression can be given in the question and right side expression can be given in the option. Okay. So अभी I am giving you to prove it. इसका objective भी बनाया जा सकता है. Okay. So we need to prove it. See how to prove it. Yeah, of course, where C belongs to A to B. This is given. Try it. I'm coming in a minute. Are you doing it? Are you done? So you need to tell me which function we need to take and in which function we need to apply LMVT. Okay. This is what you need to figure out. F square C किसके equal होता? No, actually f is a differentiable function. कोई एक we have selected a function in which they have applied LMVT. Okay,
So what is that function? जैसे rules में we used to figure out. Now in here also you need to figure out which function they have selected in which they have applied LMVT. So you need to figure that out. If you have got it, then so that's like seconds question. 10 seconds you can do it. No. Perfect square. What perfect square? No. See, I think you're not getting the point. See, first of all, you need to figure out which function. ये थोड़ा सा मतलब I mean they have done some manipulation in this so that it is not easily visible that ये LMVT लगाई गई है. But you always need to focus on this point. See whose derivative is this, and also focus on this number. If you cross multiply, you can write 3 f square c into f dash c. C वाले जो टर्म्स है ना उनको सेपरेट कर लो. ओके, फर्स्ट थिंग. देन इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर ले जाओ. ए बी वाले टर्म्स अलग करो. ए बी वाले टर्म्स यू कैन राइट एफ ऑफ बी. ओ आई एम सॉरी, I did one mistake. It was plus sign. Sorry. So if you cross multiply, then it will be f of b minus f of a. This whole into ये जो expression right side में given हुआ है, that is f square of b plus f square of a plus f of b into f of a, and divided by, bring this term also to the denominator in the right hand side, b minus a, right? Now you can see your function is, whose derivative is this? This is the derivative of f cube x, right? Because f is a differentiable function, so f cube will also be a differentiable function. And then you can see this is the derivative of ddx of f cube x at x is equal to c, this thing, you know? And this is a minus b, a square plus b square plus ab. So it is f of b the whole cube minus f of a the whole cube divided by b minus a. Okay, so in this function they have applied the Rolle's theorem. Yeah, it was very easy actually. You just needed to figure out which function you should take to apply LMVT. Okay, you got this point? C वाले separate कर लो, AB वाले separate कर लो, you'll come to know. Now suppose it is given that f is a differentiable function and if dash x is more than or equal to 2, if for all x or in some interval maybe, if f of 3 is given minus 2 and f of, then find minimum value of f of 6, ये निकालना है. ठीक है? So in such type of questions also you do using LMVT. Think about it. What is the minimum value of f of 6? नहीं, ये तो थोड़ा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन से. दिस जो अभी दिया है ना, इस इन दिस मतलब ये जो दिस लेटेस्ट क्वेश्चन, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस एडवांस पे आए हुए हैं, बट दे वर वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस. इनइक्वालिटी प्रूव करने पे LMVT के जो क्वेश्चंस आए ना, वो इनइक्वालिटी प्रूव करने वाले बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हैं.
Have you got it? आया कुछ? Eight. All right. What's your answer, Raghav? Four. Okay. Apply LMVT in the interval 3 to 6. Okay. Because function is given differential, so there's no problem. So if let C belongs to 3 to 6, then you can write f dash C is equal to f of 6 minus f of 3. एक वैल्यू गिवन है और एक वैल्यू निकालनी है, ठीक है. And you can make inequality तो पता है, you know that 6 minus 3, and f dash C is given greater than or equal to 2. Okay, so if you apply that, then you can write f of 6 minus f of 3 is greater than 3 into 2, 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, so greater than 6, 3 into 2 6, huh? So f of 6 is greater than equal to 6 plus f of 3, right? F of 3 कितना given था? -2. So yes, Raghav, your answer is correct. So f of 6 is greater than equal to 4. थ्री ओ क्लॉक शुरू होती है. व्हाट्स योर नेम बेटा? थ्री के अराउंड ही होती है. हाँ, ओके. हाँ, अभिनव. ओ या, you were there, huh? Last to last class. You got it, huh? You guys got it? ये था. All right. Now, I am giving you one Cauchy's theorem to prove. What is that Cauchy's theorem? See, if you're saying fx and gx are differentiable functions, fx and gx are differentiable function in some interval, or maybe for all x. For all x, let's take. And okay, let me write the theorem properly. Differentiable functions in open interval, एक interval ले लेते हैं, open interval a to b, functions in this, and continuous in closed interval a to b, such that g of x is not 0 for x belonging to a to b. Then prove that f of c upon g of c is f of b minus f of a divided by g of b minus g of a. जैसे इसका एग्जाम्पल पहले मैं देता हूँ, बाद में क्वेश्चंस पे वापस आते हैं, प्रूविंग पे. एग्जाम्पल इज
जैसे बोला f is a differentiable function, f is a differentiable function in some interval say a to b, okay, open interval and closed interval वैसे ले सकते हो. Then uh, prove that f dash c into b minus a is equal to f of b minus f of a into 3, wait a minute, uh, sorry, is b cube minus a cube, into 3c square. Can you prove it? Forget about Cauchy's theorem, okay? Forget about Cauchy's theorem. You need to prove this. जो मैंने अभी Cauchy's theorem लिखी थी उससे मत कॉपी करना, वो तो बाद में. पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे, फिर हम Cauchy's theorem को प्रूव करेंगे, ओके? हाँ, अलग अलग LMVT लगाएंगे, ठीक है. किस पे अलग अलग LMVT लगाएंगे? Are you talking about this question? उस थ्योरम को नहीं लगाना है, ठीक है. Cauchy's theorem नहीं लगानी है. We need to prove this question. ये एग्जाम्पल के का जो मेथड होगा प्रूव करने का, दैट मेथड वी विल यूज टू प्रूव Cauchy's theorem, बिकॉज Cauchy's theorem इज नॉट इन सिलेबस, बट जो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें मेथड लगाना है वो अपने सिलेबस में है. सो दिस क्वेश्चन कैन बी गिवन. अच्छा, किसी ने मुझे बोला था अभी कि अलग अलग LMVT लगाएंगे. अलग अलग LMVT अगर तुम दो पे लगाओगे फंक्शंस में, तो उनका जो C होगा ना, दैट विल नॉट बी सेम. किसी का C C1 होगा और दूसरे का C C2 होगा. तो जब डिवाइड करोगे तो वो f ऑफ C1 अपॉन g ऑफ C1 आएगा. आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? C सेम थोड़ी होगा. तो अलग अलग LMVT लगा के डिवाइड करके Cauchy's प्रूफ नहीं होता है, ओके? Abhinav, are you getting this? Substitute the value of f dash c, then same आएगा. कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें? बेसिकली इसको, इस क्वेश्चन को इफ यू सी, दिस क्वेश्चन इज गिवन. बेसिकली इसमें जो प्रूव करना है दैट इज f dash c डिवाइडेड बाय 3c स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a. अच्छा, यहाँ पे मुझे a को पॉजिटिव देना पड़ेगा, है ना, a एंड b को पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है. डिवाइडेड बाय c क्यूब, सॉरी b क्यूब माइनस a क्यूब. इट सीम्स कि दो फंक्शंस, ये देखो थ्योरम तो यही Cauchy's लगाई गई है ना, यहाँ पे कंडीशन हो रही है. देखो यही थ्योरम तो लगाई गई है. f फंक्शन f है और g फंक्शन x क्यूब है, राइट. यू कैन सी दैट. ये x क्यूब फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा ना. और यहाँ पे देखो b क्यूब माइनस a क्यूब. बट ये डिवाइड करके नहीं आया, इसको क्वेश्चन को प्रूव करना है अपन को, और ये Cauchy's लगा के नहीं करना है, ओके? हाँ, जब हम व्हेन वी नो Cauchy's, तो फिर हम बोल सकते हैं कि यस इट इज ट्रू, दिस इज ट्रू, राइट, दिस इज ट्रू. तो ऑप्शन में वो दे सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू. तो वी कैन सी यस दिस ऑप्शन इज ट्रू, बिकॉज ये तो Cauchy's थ्योरम लगाई गई है. बट हाउ टू प्रूव इट नाउ? और प्रूव करने के लिए हम अगेन रिपीटिंग कि दोनों पे अलग अलग LMVT लगा के डिवाइड नहीं करेंगे, बिकॉज दोनों पे अलग अलग LMVT लगाएंगे तो दोनों का C सेम नहीं आएगा, उनका C डिफरेंट होगा, किसी फंक्शन का किसी अलग पॉइंट पे आएगा.
तो देखो इसको करने का तरीका ऐसा होता है, शैल आई टेल यू प्रूफ, बता देता हूँ ना। इसमें क्या करते हैं कि जहां जहां पे सी लिखा है, जिनको डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है, उसमें एक्स डाल दो सी की जगह पे और इंटीग्रेट कर दो, है ना। इंटीग्रेट कर लो सी की जगह एक्स डाल के। जैसे यहाँ पे सी था तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, बी क्यूब और ए क्यूब वाले टर्म्स एज इट इज रहने दो, ठीक है, माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3c² एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इसको इंटीग्रेट कर लो। इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करके जो फंक्शन आएगा उसको एच एक्स फंक्शन मान लेते हैं। तो एच एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू बी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस सी क्यूब इंटू सी नहीं मतलब एक्स क्यूब इंटू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये समझ आया? दिस स्टेप इज दिस ओके? गॉट इट? आर यू गेटिंग दिस स्टेप? फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बिकॉज एफ इज गिवन डिफरेंशियबल फंक्शन और दूसरा फंक्शन जो हमने लिया था एक्स क्यूब, दैट इज ऑलरेडी वी नो दैट इज डिफरेंशियबल। तो ओवरऑल दिस समेशन इज डिफरेंशियबल, मतलब एच एक्स इज डिफरेंशियबल, राइट? एच एक्स इज अ डिफरेंशियबल फंक्शन, ओके, डिफरेंशियबल फंक्शन। अब देखो उसने क्या बोला है, एच डैश, ये क्या लिखा है, ये एच डैश सी इज इक्वल टू 0 लिखा है ना। तो अगर एच एक्स डिफरेंशियबल फंक्शन है तो एच डैश सी 0 कब होता है, जब इसमें रूल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो ए टू बी में, मतलब एच ऑफ ए इज इक्वल टू एच ऑफ बी होना चाहिए, राइट? एच ऑफ ए इज इक्वल टू एच ऑफ बी होना चाहिए, रूल्स थ्योरम शुड बी एप्लीकेबल। सो मतलब रूल्स थ्योरम चेक कर लेते हैं। सो लेट्स चेक एच ऑफ ए। तो एच ऑफ ए चेक करेंगे तो एच ऑफ ए विल बी एफ ऑफ ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस ए क्यूब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो इसमें कुछ कैंसिल हो जाएगा और फाइनली सिंप्लीफाई होकर क्या आएगा, देखो ए क्यूब एफ ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास बचेगा बी क्यूब एफ ऑफ ए माइनस ए क्यूब एफ ऑफ बी, ये आएगा एच ऑफ ए, है ना। नाउ चेक एच ऑफ बी। सो इफ यू चेक एच ऑफ बी then that is going to be f of b b cube minus a cube minus b cube f of b minus f of a. If you simplify तो ये आएगा तुम्हारा b cube f of a, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म, और आएगा माइनस a cube f of b. You can see these two are same, right? So it means h of a is equal to h of b. So hence we can say Rolle's theorem is applicable. So now we can say h dash c is equal to 0 and h dash c को 0 करेंगे. So we'll get this, and by writing this we'll get this. समझ आया? मतलब to prove Cauchy's theorem यहाँ पे क्या फंक्शन मानेंगे बताओ? We'll take a function hx is equal to, हाँ c की जगह पे x डाल दो, है ना। अच्छा यहाँ पे मैं सॉरी डैश लगाना भूल गया था, एफ डैश अपॉन जी डैश। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कैरी ऑन। एफ डैश अपॉन जी डैश, ओके, इन दिस एफ डैश अपॉन जी डैश। हाँ, तो इसमें फंक्शन क्या लेंगे, इसमें फंक्शन लेंगे एफ ऑफ सी, सॉरी नॉट सी, इंटीग्रेट करेंगे एक्स ले लेंगे ना, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, एक ये फंक्शन आएगा, है ना, माइनस जी ऑफ एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो जी ऑफ एक्स एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ओके, दिस इज द फंक्शन वी नीड टू, हाँ राघव, आर यू गेटिंग दिस? ऑल राइट अभिनव। In this function you can check h is a differentiable function and h of a is equal to h of b, h of a और h of b बराबर है,
That means you can say h dash c is equal to 0, and by putting h dash c is equal to 0 you will get this. Okay, तो ये होता है कॉशीज थ्योरम. इसको अप्लाई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में. तो ऐसे कोई एफ ऐसा वो दे सकता है तुम्हें, लाइक बोला कि एफ इज अ डिफरेंशियबल फंक्शन. ओके, कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई कर सकता है, डिवाइड. एफ इज अ डिफरेंशियबल फंक्शन इन से 2 to 6. Okay, then which of the following will be correct? Option A, you can write f dash c, where c belongs to 2 to 6. So f dash c upon f dash c into 4 times f dash c. बताना मुझे which of the following options are correct. I am framing a question. 4 times of f dash c is equal to, okay, no, not 4 times, I'm sorry. E raised to 6 minus e raised to 2 is equal to e raised to c f of 6 minus f of 2. B option is f dash c to 32 16, sorry, let me change this, 16, okay, is equal to c into f of 6 minus f of 2. All right, C option is 32 into f dash c is equal to c into f of 6 minus f of 2. Okay, correct options बताने हैं. It's a multiple correct type. Now you can write dash of c into f dash of c into ln of 3 is equal to f of 6 minus f of 2. And one more option, okay, E. 3c f dash c ln of 3 is equal to f of 6 minus f of 2. Tell me the correct one. Previous was this. चलो तो मैं अभी ना बता देता हूँ. We just proved this. ये वाला स्लाइड था. We just proved this. कौन सा थ्योरम? Cauchy's theorem. Okay. So Cauchy's theorem prove करने के लिए what we have taken, ना ये वाला था ये. So ये प्रूव करना था f dash c upon g dash c is equal to this. तो जैसे वो क्वेश्चन प्रूव किया था, तो यहाँ पे मैंने आई हैव टेकन वन फंक्शन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पहले टर्म्स को एक साइड लाया और इंटीग्रेट करके एक फंक्शन मान लिया. तो इन प्लेस ऑफ c वी हैव रिटन x, और इंटीग्रेट करेंगे तो f dash का क्या हो जाएगा, f हो जाएगा. ये b और a वाले टर्म्स एज इट इज. सो ये टर्म एज इट इज और ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये एज इट इज. ओके, ये लिखा. नाउ वी हैव गॉट दिस hx फंक्शन. देन वी हैव चेक्ड कि h जो है, h इज अ डिफरेंशियबल फंक्शन एंड h ऑफ a इज इक्वल टू h ऑफ b. a और b डाल के देखो इसमें, यू विल गेट सेम वैल्यूज जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था. सो दैट मीन्स वी कैन से h dash c इज इक्वल टू 0 एंड h dash c 0 होगा. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना. 0 कर देंगे डिफरेंशिएट करके, c डाल देंगे और डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा वापस से. सो दिस इज द Cauchy's theorem. ये अब हम सीधे लगाने वाले हैं, ठीक है. Now we are going to directly apply this. So I have given you a lot of questions. F is given a differentiable function in 2 to 6. C is a number between 2 and 6. And now we need to check how many of these options are correct. Now just be careful, okay? Don't answer randomly. Some might be wrong also, okay?
No, all are not correct. That is wrong, Raghav. Mm-hmm, mm-hmm. Yeah. No, 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 do not guess it, okay? Solve it, okay? Now you know the theorem. You want to learn or just you want to decode my pattern, huh? Okay, I'll tell you the first one, okay? So first one you can see, one of the function is, okay, first पहले check कर लेते हैं, ठीक है? So first में f function is so fx and g function is e raised to x, okay? So what was the theorem? Theorem was f dash c upon g dash c is equal to f of b minus f of a divided by g of b minus g of a. Both should be differentiable function or g should not be zero, all right? ठीक है, तो yes, e raised to x is not zero. So if you apply Rolle's theorem, तो f dash of c and e raised to x का differentiation is e raised to c only, and then it is going to be f of b minus f of a divided by e raised to b minus e raised to a. So if you cross multiply, right, so this is written correct. Perfect. A is correct. Now tell me b, whether b and c both are correct, you are saying. बी एंड सी में दोनों तो करेक्ट नहीं हो सकते, बिकॉज इन बी इट इज 16 and C it is 32, so exactly one will be correct out of B and C. Now so which one is correct, B or C? Abhinav, you tell me, you got it? Right, okay, true. So if I solve this B, then in this I'll take f function as fx and other function gx is equal to c square, all right? Then if I apply the theorem, then f dash c upon
इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2c is equal to f of b minus f of b means 6, right? And f of 2 divided by 6 square. G of 6, that is 6 square 36 minus g of 2 4. So this is 32 and ये 2 से 32 पर जाएगा, so 2 से cancel हो गया, 16 times of f dash c is equal to c times of f of 6 minus f of 2, है ना. अब ये सही है तो पक्का यहाँ 16 है तो 32 रॉन्ग होगा, राइट? बिकॉज यहाँ तो सेम ही फंक्शन यूज किया गया है, राइट? सो सी इज रॉन्ग. वेट अ मिनट. So C is wrong. What about D? D में कौन सा फंक्शन लिया है दूसरा? What about D and out of D and E, which one is correct? E. अच्छा, E correct बोल रहा है. Okay, E is correct, you are saying, huh? What is the second function in this? For Cauchy's theorem, what is the second function? Tell me someone. Raghav, Subhash. Yes, ln x. Very nice. So if you apply, this is f dash of c. If you differentiate ln x, it is 1 upon c. And that is going to be f of 6 minus f of 2. Acha, now check. ln x should not be 0. Its derivative should not be 0. Okay. So yes, it is not 0 in this interval 2 to 6. And it is ln of 6 minus ln of 2. If you cross multiply, this is c f dash of c. This is ln 6 upon ln 2, ln 6 upon 2, ln 3. So ln 3 is equal to f of 6 minus f of 2. Perfect. So this is correct. D is correct. If D is correct, then E is wrong. Got it? Understood? Okay. Now, one more thing I'm covering. Straight line बाद में करेंगे. I'm doing Jensen's inequalities. Have you done Jensen's inequalities? Calculus में. Have you guys done it? Jensen's inequalities. नाम सुना है? All right. Let's do it. It's a very interesting inequality. See, if f is twice differentiable function and f double dash x is, say, more than 0, all right? All right. f double dash x, all right, कल करेंगे straight lines. f double dash x is more than 0. Then इसका जो graph होता है, that is concave up. We are using concavity. It's concave up. And if f double dash is less than 0, then it will be concave down. Okay. Okay. Now see,
if you take this kind of graph and you are taking some points on x-axis x1, x2, x3, x4 and so on, say xn, तो इनको जब ज्वाइन करेंगे, ध्यान से समझना जरा, वेट अ मिनट गाइस, फोकस करो फोकस. इनको इन पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट है x1 कॉमा f ऑफ x1, राइट. दिस पॉइंट इज x2 कॉमा f ऑफ x2. दिस पॉइंट इज xn कॉमा f ऑफ xn. वेरी सिंपल, एक बार में समझ आ जाएगा, बस 2 मिनट ध्यान रखना. इसका जो एप्लीकेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स यू विल गेट अ पॉलीगन. इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो विल गेट अ पॉलीगन ऑफ n साइड्स. ओके, n साइडेड पॉलीगन. इस पॉलीगन का जो सेंट्रॉइड होता है ना, दैट इज ऑलवेज इनसाइड द पॉलीगन. ओके, पॉलीगन का जो सेंट्रॉइड होता है दैट इज ऑलवेज इनसाइड द पॉलीगन. तो ये जो g पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स, दैट इज सिग्मा ऑफ एक्स आई अपॉन एन कॉमा सिग्मा ऑफ f ऑफ एक्स आई अपॉन एन. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होता है जैसे ट्राइंगल में. फोर साइडेड लेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाई 4 होगा x कोऑर्डिनेट, है ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? देखो यहां से आई एम ड्रॉपिंग अ वर्टिकल लाइन. ओके, वर्टिकल लाइन ड्रॉप करेंगे. सो व्हाट इज दिस? से दिस पॉइंट इज a और ये जो कर्व पे पॉइंट आ रहा है, से दैट पॉइंट इज b. ओके, a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम. x coordinate of point A will be same as x coordinate of point G. So that is sigma of xi upon n, comma 0. What is the coordinates of point B? B is on the curve. Can you tell me what is the coordinates? इसका x coordinate of B will also be same, f of xi divided by n. But y coordinate कैसे निकालते हैं? Because B is on the curve, y is equal to fx, and you know x coordinate is x1, then y coordinate will be f of x1. So it is going to be f of sigma xi divided by n. Have you got it? इतना समझ आया? बस इतना हो गया. अब देखो क्या करना है. Now we are going to write the final statement. Final statement is this: because this graph is concave up. जरा ध्यान से समझना. ये ग्राफ, this graph is concave up. ये वाला ग्राफ concave up है. Polygon is inside this. Polygon is inside, I mean ऊपर के साइड है. So G point is above the B point. Y coordinate of, अगर G जो है वो पॉलीगन के अंदर है, पॉलीगन कर्व के ऊपर है, तो G पॉइंट का Y कोऑर्डिनेट B पॉइंट के Y कोऑर्डिनेट से हमेशा ज्यादा होगा. दैट मीन्स ऑर्डिनेट ऑफ G will be greater than or equal to ordinate of B. Is that okay? x सेम होगा बट y कोऑर्डिनेट g का बड़ा होगा. सो हियर इज द इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी क्या होगी? देखो, ऑर्डिनेट के लिए y, इसका ऑर्डिनेट क्या है? सिग्मा ऑफ f ऑफ एक्स आई. इसका एप्लीकेशन माइंड ब्लोइंग है, मजा आ जाएगा देखना, अभी एप्लीकेशन बताऊंगा. तो डिवाइडेड बाई n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हो जाएगा ऑर्डिनेट ऑफ दिस इज f ऑफ सिग्मा f ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई n. हैव यू अंडरस्टूड दिस? कॉनकेव अप के लिए ऐसा होगा. इतना समझ आया? हाँ, ज्योमेट्री एंड कैलकुलस बोथ, एंड विल प्रूव इवन AMGM का प्रूफ भी इससे प्रूव हो जाता है. AMGM इनइक्वालिटी. देखो इफ लेकिन अगर ये इफ f डबल डैश इज लेस देन 0 तो फिर ग्राफ ऐसे हो जाएगा, राइट. एंड देन पॉलीगन विल बी, नीचे आ जाएगा पॉलीगन, है ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? और पॉलीगन अगर नीचे आ जाएगा तो फिर G पॉइंट नीचे होगा और B पॉइंट ऊपर होगा, राइट. इनइक्वालिटी विल रिवर्स, राइट, फॉर कॉनकेव डाउन. देन फिर इनइक्वालिटी ऐसे हो जाएगी, सिग्मा ऑफ f ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई n विल बी लेस देन और इक्वल टू, ये देखो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड है, f ऑफ सिग्मा एक्स आई बाई n. ये कर्व का पॉइंट है ना, उल्टा हो जाएगा. नाउ लेट्स प्रूव इट, let's apply it.
इसको अप्लाई करते हैं। जैसे ट्राइंगल में बहुत जगह यूज होता है, ट्राइंगल की इनइक्वालिटीज प्रूव करने के लिए। सो बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज यू कैन फाइंड यूजिंग दिस Jensen's inequality. See the first question. Find the minimum and the maximum value of sin A plus sin B plus sin C, where A plus B plus C is equal to pi. Okay, करें? Would you like to try? चलो ये वाला मैं बता देता हूँ. You know sin x is like this. This is pi and this is 0. So A, B and C, all three will lie in this interval, A, B and C. And if A, B and C will lie, so this point is going to be A comma sin A. एक बार पूरा फिर से कर लेते हैं. B comma sin B. And this point is going to be C comma sin C. So if 3 points are given and they are lying on a curve, they will form a triangle. So centroid of this triangle, अब इस बार नीचे होगा centroid, B point, ये वाला point इसके ऊपर होगा. कोई भी point ले लो, P ले लो ये. हाँ, तो G point का ordinate of G क्या आएगा? Ordinate of G is now less than or equal to ordinate of P point. Ordinate of G क्या आएगा? Simple, sin of A plus sin of B plus sin of C by 3. और ordinate of P क्या आएगा? Sin of A plus B plus C by 3. बिकॉज इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट तो सिग्मा A by 3 होगा और y कोऑर्डिनेट सिग्मा sin A by 3 होगा, है ना? तो इसका y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? कर्व में ये x कोऑर्डिनेट डालना पड़ेगा. तो कर्व के अंदर देखो x कोऑर्डिनेट डाल दिया है ना. और a plus b plus c 180 डिग्री है, so a plus b plus c by 3 is 60 डिग्री. So you'll get this sin of a plus sin of b plus sin of c is always less than equal to 3 root 3 by 2. So this is the maximum value of sin a plus sin b plus sin c in any triangle. And equality कब hold करेगी? Equality holds, पिछले वाले में भी equality नहीं बताया मैंने. Equality holds when x1 is equal to x2 is equal to x3 सारे बराबर हो जाए. ओके, फिर वो पॉइंट बन जाएगा. दैट पॉलीगन विल बिकम अ पॉइंट. तो A, G और B, G and B सेम मर्ज हो जाएंगे. So in this, when equality holds when A is equal to B is equal to C is equal to pi by 3. तीनों पॉइंट सेम हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, सारे पॉइंट्स एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे. Have you got it? You can do a lot of questions. देखना, अभी और मजा आएगा. रुको. Find the minimum value of tan of A by 2 plus tan of B by 2 plus tan of C by 2, where A plus B plus C is equal to pi. बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस का मिनिमम मैक्सिमम यू कैन फाइंड.
You're getting 3. 3 is not correct. Hi Prakash. What have we written? And remember me. हम शाम में बात कर रहे हैं. Sam में. Or can you write clearly? Prakash Rai. 3 root 3 seems correct. Let's see. So we'll take function fx is equal to tan of x by 2. Tan x by 2 function, if you see, tan x by 2 is like this. It is concave up. And this point is what? Pi? Yeah. X by 2 makes x stretch हो जाता है ना. You can take x also, then a by 2, b by 2, c by 2 point ले लेना. Or you can take x by 2 and points a, b, c ले लेंगे, right? So a, b, c लेंगे. So you will get triangle like this. ऐसा triangle आ जाएगा, right? So triangle का जो centroid का y coordinate होगा, ordinate of centroid, that is tan of a by 2 plus tan of b by 2 plus tan of c by 2, और centroid इस बार ऊपर होगा, right? So that will be greater than or equal to tan of, now point क्या होगा, a plus b plus c x coordinate divided by 3 and by 2 already है ना. हाँ प्रकाश, are you in class 10th? You said you are in class 10th. 10 a by 2 plus tan b by 2. हाँ बोल तो रहे. Tan b by 2 plus tan c by 2, but 3 root 3 is not correct. Is greater than equal to, it is 3 tan of, this is pi by 6. Pi by 6 is actually 1 by root 3, right? So this 3 by root 3, which is, you can see, is 1 by root 3. By the way, एक trick बताऊं तुम्हें. Is my voice not clear? Raghav? Is my voice not clear? Wait a minute. Is it different now? I mean, is it okay now? अच्छा clear था. अरे यार clear तो था. Okay. What has happened? हाँ देखो, मिनिमम एंड मैक्सिमम, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ तुम्हें. दिस इज अ मेथड यू लर्न, राइट? एंड बाय द वे, minimum and maximum always occurs when angles are equal. So if you take a is equal to b is equal to c is equal to pi by 6, pi by 3, then you can check your answer. What is that? हाँ, so a को अगर तुम pi by 3, b को pi by 3, c को pi by 3 ले लोगे, तो you'll get your answer actually. All right, so answer is this, root 3. Is it okay? All right, now see, acha, I'm telling you the proof of AMGM, okay? Proof of AMGM inequality. बस ये लास्ट है, and then we'll end. Yes, you can apply this for
लाइक अगर तुम्हें कोसेक इसका चाहिए, कोसेक ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ बी प्लस कोसेक ऑफ सी, ठीक है, ट्राइंगल के लिए है ना, सो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कोसेक ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, बिकॉज कोसेक में कॉनकेव अप होता है ना, ऐसे 0 से पाई में, है ना। कॉस के लिए भी ट्रू है, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, राइट। सो यहाँ से तुम इसमें पुट करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी पाई बाई 3, देन ये आ जाएगा तुम्हारा कितना आएगा वैल्यू इसका, कोसिक 60 आ जाएगा, कोसिक 60, तो कोसिक 60 के लिए भी लगा सकते हो ना, 2/√3, तो 6/√3 मतलब 2√3 हो जाएगा, है ना, ऐसा। हाँ देखो, लेट मी टेल यू AMGM inequalities, then we'll end. For to prove AMGM inequality, कौन सा फंक्शन चूज करेंगे, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओके। सो आई टेल यू विच फंक्शन वी चूज। सो हमें एक ऐसा फंक्शन चूज करना है जो प्रोडक्ट और समीशन को रिलेट कर सके ऑफ एन पॉइंट्स, ओके। ए प्लस बी प्लस सी को आपने क्या लिया, ए प्लस बी प्लस सी पाई, दिस वी आर प्रूविंग इट फॉर अ ट्राइंगल ओनली, ये सब ट्राइंगल के लिए प्रूव कर रहे हैं, ओके। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, वी आर प्रूविंग इट फॉर अ ट्राइंगल ओनली, अंडरस्टूड। A plus B plus C will be pi, then A plus B plus C by 3 will be pi by 3, and cosec pi by 3 is 2/√3, and then you'll get the minimum value of cosec A plus cosec B plus cosec C. Is that okay, Raghav? Equal angle, this equality will hold, this equality will hold when angles are equal, मतलब A is equal to B is equal to C is equal to pi by 3, और जेनसन्स इन इक्वेशन में इक्वालिटी कब होल्ड करती है, जब सारे पॉइंट्स बराबर हो, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी लोगे तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू पाई बाई 3 आएगा ना। सो इफ यू पुट पाई बाई 3 इन दिस, पाई बाई 3 एंड पाई बाई 3, यू विल गेट दिस वैल्यू 2√3, रख के देख लो, कोसेक कोसेक 60 प्लस कोसेक 60 प्लस कोसेक 60, राइट, दैट इज जस्ट टू चेक योर आंसर व्हेन इज दिस इक्वालिटी होल्ड्स, ओके। आती सारी वैल्यूज इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए है, मिनिमम मैक्सिमम, ओके ओके। चलो चलो इसके प्रूविंग पार्ट पे एक जल्दी से देख लो, है ना, एक नजर डाल लेते हैं। सो सी, this is the graph of ln x, right? Now we have taken n points, x1, x2, x3 and so on up to xn, ऐसे n points ले लो, n points लोगे, so you can take these points plot कर लो ऐसे यहाँ पे, so if you join them ऐसे n sided polygon बन जाएगा, right, and this, and then finally ऐसे join कर लेते हैं, right. See, this point is x1 ln x1, x2 ln x2, right, x3 ln x3, getting this, xn ln xn. Now using Jensen's inequality, guys, are you following it? समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं हम लोग? We are proving AMGM inequality for n numbers, n positive numbers, है ना. So n positive numbers you can see, x1 x2 positive numbers हैं. Okay. So now you can see centroid. Centroid क्या होने वाला है इसका? Centroid is sigma of x1 upon n and y coordinate is sigma of ln of xi divided by n. ओके, और ये ऊपर वाला पॉइंट क्या आने वाला है, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट P,
इसका p का ऑर्डिनेट लिखेंगे, ऑर्डिनेट ऑफ p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑर्डिनेट ऑफ g। सो ऑर्डिनेट ऑफ p क्या आएगा, फंक्शन में ये डालना पड़ेगा ना। सो फंक्शन कौन सा है, लॉग। सो ln ऑफ सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाई n is greater than equal to ln of x1 plus ln of x2 and so on plus ln of xn divided by n। ये समझ आया। यहाँ से हो जाएगा ये ln of sigma एक्स आई डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू, इनको अगर हम ऐड लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वी कैन राइट ग्रेटर देन इक्वल टू ln ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे xn, और ये 1/n जो है वो पावर में चला जाएगा, है ना, ऐसा। बिकॉज लॉग फंक्शन लेंगे तब ये प्रूव होगा, है ना। मतलब ये फंक्शन, ये इनइक्वालिटी प्रूव करने के लिए, बिकॉज लॉग फंक्शन जो है ना, वो लॉग को जब ऐड करते हैं तो दैट प्रॉपर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके मल्टीप्लाई हो जाते हैं नंबर्स। आई मीन लॉग विल ब्रिंग दीज नंबर्स इन प्रोडक्ट, और हमें प्रोडक्ट लाने के लिए जीपी ज्योमेट्रिक मीन लिखने के लिए प्रोडक्ट चाहिए होता है, राइट। सो लॉग विल डू दैट वर्क, इसलिए लॉग फंक्शन लिया। एंड लॉग का ग्राफ कॉन्केव डाउन है, सो वी कैन अप्लाई जेनसेंस इनइक्वालिटी। नाउ यू कैन रिमूव लॉग, ओके, लॉग हटा देंगे, लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है, सो लॉग यू कैन रिमूव एंड दिस विल बी सिग्मा ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, ये अर्थमेटिक मीन है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ज्योमेट्रिक मीन है, x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टू xn रेज टू 1/n। दिस इज ज्योमेट्रिक मीन। यू गॉट इट। देखो कितना छोटा सा प्रूफ है, छोटा सा प्रूफ AMGM इनइक्वालिटी का, राइट। और भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे AMGM। नाउ आई विल कीप गिविंग यू AMGM आई मीन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस जेनसेंस इनइक्वालिटी लेटर आल्सो, ओके। कराते हैं जेनसेंस इनइक्वालिटीज इन सिलेबस, क्वेश्चंस आते भी हैं। जेनसेंस इनइक्वालिटीज इन सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या इट्स वेरी यूजफुल एक्चुअली, या वेरी यूजफुल, बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी बनेंगे। कराते हैं सब लोग। चलो फिर अब नेक्स्ट वील डू, है ना, लेटर। Straight line, I'll tell you when will I plan. AOD will continue tomorrow, okay? And straight line be that session is straight line, the pair of straight lines I'll try to finish tomorrow, okay? Okay, chalo. Bye bye. Take care.